Inventory Management, Part 2, 157th module of Financial Management course. We have started our discussion on inventory management, and we have seen that inventory management is something which is essential for any business organization, particularly those business organizations where they have got huge inventory, where there are many items in inventory. So the process of purchasing inventory, which is called the procurement process, recording the inventory and keeping a certain level of inventory with them so that they can avoid what is called stockouts. This is all part of inventory management and it is extremely important. यानी किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर उन्हें ये मालूम ना हो कि हमें कब इन्वेंट्री आइटम्स को ख़रीदने के लिए प्रोसेस को जनरेट करना है, तो हो सकता है कि वो स्टॉक आउट को फेस करें, यानी उनके पास इन्वेंट्री ख़त्म हो जाए. सो द प्रोसेस ऑफ प्रोक्योरिंग इन्वेंट्री विच स्टार्ट्स विद द बिन कार्ड एक कार्ड है जो कि एक अलमारी या एक शेल्फ या एक बॉक्स के ऊपर लगा हुआ है जहाँ पर वो इन्वेंट्री आइटम स्टोर की गई है. एंड व्हेनेवर आइटम्स ऑफ इन्वेंट्री आर एडेड in that bin card is updated, and when the items are taken out of that bin, the bin card is also updated. So whenever that bin card actually shows a certain level, which is called the level of reordering, the new order is generated. यानी एक नई purchase requisition generate की जाती है. Purchase requisition का मतलब है कि परचेज करने के लिए, गुड्स को परचेज करने के लिए, एक ऑर्डर प्लेस करने के लिए रिक्वेस्ट का रेज करना. दिस परचेज रिक्वेजिशन हैज़ टू पास थ्रू several hands and is to be approved by the people who are the part of the organization by looking at the quantity which is available, by looking at the production requirements, and ultimately on the basis of this purchase requisition, an order to purchase new inventory items is placed. So that is what is called a purchase order or a PO. On the basis of it, the goods are delivered by the supplier, which are received in the store, and along with several documents which include the gate pass or the quality assurance report, and ultimately these are placed in those bins. यानी ये वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस के ज़रिए से हम इन्वेंट्री को मैनेज करते हैं. इन द नेक्स्ट मॉड्यूल्स ऑफ दिस डिस्कशन वी विल बी टॉकिंग अबाउट वेरियस लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री. इन्वेंट्री कितनी होती है, कितनी होनी चाहिए, और कौन सी इन्वेंट्री हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है. अ बेसिक प्लान विच इज़ कॉल्ड द ABC प्लान is about managing the inventory with reference to the quantity of inventory and also with reference to the amount which is involved in holding that inventory. We say that there are some inventory items which are very expensive, but generally these inventory items are in smaller quantities. And then there are inventory items which are very cheap, but these inventory items generally are in very large quantities. But still the large quantity of those very cheap items would not require a lot of investment in inventory. And in between the two there are some inventory items यानी जो बहुत expensive भी नहीं होते और बहुत सस्ते भी नहीं होते और उसमें भी हमारी investment involve होती है. तो हम अपनी inventory items को इन तीन ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं. We call it A group, B group and C group. A is the most expensive inventory items, जिनका नंबर या क्वांटिटी तो कम होती है लेकिन उसके अंदर हमारी बहुत ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होती है. हम ग्राफ के ऊपर देखते हैं स्क्रीन में कि 20 यूनिट्स ऑफ और 20% ऑफ the inventory items are actually almost consuming 80% of the total cost of inventory. यानी हमारी इन्वेंट्री के अंदर जितनी अमाउंट ब्लॉक हो रही है, जितना हमारा वर्किंग कैपिटल इन्वेंट्री में ब्लॉक हो रहा है, वो उसका 80% सिर्फ और सिर्फ ए टाइप आइटम्स के अंदर है. लेकिन
उनकी क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ 20% है। ये जो 80-20 प्रिंसिपल है ये इन्वेंट्री के साथ साथ और भी बहुत सी जगह पर एप्लीकेबल होता है। जब हम बी टाइप आइटम्स को देखते हैं तो हम देखते हैं कि 20 से 50 यानी 30% हमारे पास जो इन्वेंट्री आइटम्स हैं वो बी क्लास या बी कैटेगरी में फॉल करते हैं। बट इफ़ यू लुक एट दैट फ्रॉम 80 दिस इज ऑलमोस्ट लाइक 95%। तो हमारे 15% of the cost is actually required for 30% of inventory items which are the B class or B category items, यानी ये दरमियानी कीमत के items हैं। And then very large quantity, in the graph we can see that in the light blue color that 50% from 50 to 100, that means 50% of our inventory items only require 5% कॉस्ट, यानी आप बी क्लास से अगर 95% से ऊपर 100 की तरफ जाएं तो सिर्फ 5% कॉस्ट हमारी ऐसी है जो कि 50% ऑफ द वॉल्यूम के लिए रिक्वायर्ड है। सो दिस क्लासिफिकेशन इज नॉट जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ पुटिंग द इन्वेंट्री आइटम्स इनटू ए, बी और सी कैटेगरी, बट दिस क्लासिफिकेशन इज ऑल्सो फॉर द पर्पज that we need to take more care of those inventory items which are in category A. यानी अगर हम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा कैटेगरी ए आइटम्स खरीद लेंगे तो हमारी बहुत से वर्किंग कैपिटल की अमाउंट उसमें इन्वॉल्व हो जाएगी और वो वहाँ पर हमारे पास स्टेगनेंट पड़ी होगी। और अगर हम अपने सी कैटेगरी आइटम्स को ज़रूरत से ज़्यादा भी खरीद लेंगे तो शायद हमारी बहुत ज़्यादा कॉस्ट उसमें इन्वॉल्व नहीं होगी। So any loss of A type or A class inventory item is a huge loss. On the other hand, loss of C category items would not affect the company much. So for the purpose of this ABC plan or ABC categorization of inventory is to group inventory items in 3 categories and then making policies and procedures accordingly so that we can control these inventory items in the best possible manner. With reference to inventory management and the stock levels, as we'll be talking more about these various levels of inventory or stock, a very important part of our stock is what is called the safety stock. यानी safety stock वो stock है कि जिसको हम अपने पास हमेशा रखना चाहते हैं। One can very easily understand by the name of this stock that it is safety stock. This is for the purposes of securing ourselves, of having a safety that in case if our new shipment, if our new order does not reach to the production house in time, then we should have this safety stock with us. हम अपनी इस डिस्कशन को इस मॉड्यूल में यहाँ कंक्लूड करेंगे और आगे चल के हम इन स्टॉक लेवल्स की मज़ीद डिस्कशन करेंगे, इस पे हम मज़ीद बात करेंगे। लेकिन ये सेफ्टी स्टॉक के बारे में हमें ये ज़रूर जहन में रखना है कि अगर सेफ्टी स्टॉक नहीं होगा तो उसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं। सेफ्टी स्टॉक के ना होने से हम स्टॉक आउट की तरफ जा सकते हैं कि ऐसी सूरत हाल हो जाए कि हमारे पास स्टॉक्स ना हो, लेबर मौजूद हो, ऑर्डर्स मौजूद हो और हमें लॉस उठाना पड़े। सेफ्टी स्टॉक के ना होने की वजह से यूँ भी हो सकता है कि हमें इमरजेंसी में गुड्स को, इन्वेंट्री आइटम्स को ख़रीदना पड़े, एंड इन दैट केस probably we'll have to pay a higher price to buy those stock levels and hence our profits will be curtailed. So we'll continue our discussion on inventory management in the next modules, and we'll see that what are the other aspects of inventory management.